Jai Jagannath, all of you, and welcome to our YouTube channel. Hope you all are fine and doing well. Okay, so आमे जो चैप्टर ऊपर डिस्कस करथिले से चैप्टर थिला क्लास 8 रो बायोलॉजी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो लास्ट क्लास रे आमे जहाँ सब डिस्कस करथिले ता ऊपर टिके नजर पके देबा. नेक्स्ट आमे आज रो क्लास को जबा. सो लास्ट क्लास रे हम बेसिकली सोइंग पढ़िथिले. ओके, सोइंग आउ तुमर नेक्स्ट जोटा थिला एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ए दुईटा टॉपिक ऊपर आमे डिस्कस करथिले. ओके, सोइंग जो मंजी बुणा प्रणाली केमती सीड सिलेक्शन होथला से विषय जानथिले, केमती मंजी बुणा होथला सेटा जानथिले, आ मंजी बुणिया पई कोन सब टूल्स रो यूज करा होथला से विषय आमे जानथिले. ए भितर ट्रेडिशनल टूल कथा जानथिले, मॉडर्न टूल कथा जानथिले. ओके, सीड ड्रिल जेमती हे गला तुमरो मॉडर्न टूल. ठीक सेमती आमे आ गोटे टॉपिक ऊपर आलोचना करथिले एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सो मैन्योर कौन, फर्टिलाइजर कौन पई फार्मर माने व्हाई फार्मर्स एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ए सब विषय आम आलोचना करथिले. मैन्योर केमिति फर्टिलाइजर ठू डिफरेंस से विषय मध्ये आलोचना करथिले. ओके, क्रॉप रोटेशन कौन से विषय डिस्कस करथिले. डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर या विषय मध्ये डिटेल डिस्कस करथिले. और एडवांटेज ऑफ मैन्योर मध्ये आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी. तो आज क्लास में आम टॉपिक रहिबो इरिगेशन ऊपर. सो इरिगेशन कौन आम जानिबा. ओके, तापर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. इरिगेशन पर केमती आम क्रॉप को वीड्स मानक ठारो जो विषाक्त कीट पतंग रही से केमती आम क्रॉप को प्रोटेक्ट करबा से विषय जानिबा. तापर हार्वेस्टिंग विषय पढ़िबा, अमल केमती करा जाए धान. तापर नेक्स्ट स्टोरेज विषय जानिबा. ओके, आउ एनिमल्स मानक ठारो कोन सब फूड मिले से विषय जानिबा. सो आज क्लास रे हमें ए चैप्टर टाको कंप्लीट करबा को ट्राई करबा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. ता पूर्व मु तुम समस्त कहि रखिबी जो माने भी वीडियो को देखुछंती जदि वीडियो भलो लागुची ताहले सेशन को समस्त लाइक करिवा और चैनल को सब्सक्राइब करिवा निज निज संग मानक संगरे. ओके, चैनल को शेयर मध्य करिवा. ओके, सो समस्त रेडी क्लास स्टार्ट करबा. एबे ता पूर्व आ गोटे नोटिफिकेशन शेयर करबा अछि. समस्ते जहार भी किसी डाउट रहुछि से माने हमको कमेंट सेक्शन रे पहुंचाई परिबे. ओके, किंबा हमरो व्हाट्सएप नंबर एठी दिया जाइछि, समस्ते व्हाट्सएप नंबर को यूज कर परिबे. ठीक अछि, व्हाट्सएप नंबर को यूज करके जहाँ भी डाउट रोचे हमको पचारे आम से क्लियर करूँ. ओके, बाकी पिला माने पीडीएफ पाई टेलीग्राम चैनल रो डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक दे देबी. समस्ते से लिंक जरिया तुम माने टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर परिबो. ओके, सो आज टॉपिक आम पाखे अच्छी इरिगेशन. फास्ट आम जानिबा इरिगेशन कौन पिले. ओके, इरिगेशन कहले आमे कौन बुझुचे. सो इरिगेशन द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट ए रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. पिला माने हमर जो क्रॉप रे हमें रेगुलर इंटरवल रे पानी दबा. सो जल सेचन इरिगेशन कहले हमें जल सेचन बुझुचे. ओके, सो आम खेत रे हमें पानी दबा, आम चाष रे पानी दबा को हमें इरिगेशन कहूचे.
द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन varies from crop to crop पिला माने केते थरो पानी दिया जिवो एवं केते टाइम पानी दिया जिवो सेटा क्रॉप टू क्रॉप ऊपर डिपेंड करे ओके तो टाइम एंड फ्रिक्वेंसी केते थरो पानी दबा ओके को समय रे पानी दबा इटा क्रॉप ऊपर डिपेंड करछि आ सॉइल ऊपर डिपेंड करछि आ सीजन ऊपर डिपेंड करछि हम को भलिया माटी रे चाष करछे को क्रॉप चाष करछे एवं को सीजन रे चाष करछे ता ऊपर डिपेंड करछि हम केते टाइम पानी दबा आ को टाइम रे पानी दबा ठीक अछि सो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन पिला माने इरिगेशन रो कौन सब सोर्स रही ओके सो द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर सो द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर कोठू आम जलसेचन करू कोठू आम जल संग्रह करिकी आम इरिगेशन करूचे बा जलसेचन करूचे आम क्रॉप फील्ड रे ओके शस्य क्षेत्र में आम कौटू जल संग्रह करके ओके जल संग्रह करके शस्य क्षेत्र में इरिगेशन करछे बा जल सेचन करूछे सो जदी से सोर्स गुडा कथा हम कहबी ताले हम वेल्स टू जल वेल को बा नल जो तुम रही कौन कूओ को तो माने कूओ को जलसेचन सोर्स भाव यूज कर कूरु पानी नहीं पार ट्यूबवेल्स रु पानी नहीं पार पॉन्ड्स रु नहीं पार पोखरी हो गला तुम लेक्स हो गला ह्रद हो गला जोटा रिवर जमती नदी डैम्स एंड केनाल्स ये सब जगह आम पानी नहीं कि आम क्रॉप फील्ड रे इरिगेशन करि परिबा एतक क्लियर समस्ते इरिगेशन कौन आम समस्ते जानी पारले इरिगेशन रो सोर्स सब कौन आम समस्ते जानी पारले ओके सो एबे समस्त मन रे गोटे प्रश्न आसुवा सर व्हाई वाटरिंग प्लांट इज इम्पोर्टेंट कौन पानी दबा तो आम जानिले पानी ये उपाय आम दौचे पानी दबापी यही सब सोर्स आम व्यवहार करुचे किंतु एबे समस्त मन रे प्रश्न आसुवा पानी आवश्यकता कौन रही आम कौन पानी दौचे ओके सो एक क्वेश्चन ऊपर आम जीवा पिला माने वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ पिला माने प्लांट रो प्रॉपर ग्रोथ पाई वाटर टा बहुत आवश्यक वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स वाटर प्लांट को केमिति जाए जदि एक कथा मन रे आसुथिबो ताले वाटर टा पिले माने प्लांट को जाउची तार रूट द्वारा along with water minerals and fertilizer also absorbed so water संगे आउ कौन सब जाउची फर्टिलाइजर भी जाउची जोटा माटी रे मिसा जाइची ताको मध्य रूट रिसीव करूची एवं मिनरल्स मध्य रूट रिसीव करूची जोटा कि प्लांट रो ग्रोथ रे डेवलपमेंट रे हेल्प होची सो प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर जदी कहबा प्लांट 90% वाटर कंटेंट करे वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ अ सीड डज नॉट टेक प्लेस ऑन द ड्राई कंडीशन वाटर होची बहुत जरूरी कौन पाई ना जर्मिनेशन ऑफ सीड्स सीड टा जर्मिनेट करबा पाई वाटर रो बहुत आवश्यकता रही काहे ना सीड जर्मिनेशन केबे हेले ड्राई कंडीशन रे हुए नाही ओके मंजी जोटा गजा होची जोटा सीड जर्मिनेट करछे हम कहूचे सो मंजी गजा हवा पई हम देखिथिबा समस्ते जेतबे धान को गजा करिवा पई हम कोन करू ताको ओदा करिकि हमें ताको घोड़ाई के रखिता सो ड्राई कंडीशन इज नॉट सुइटेबल फॉर सीड जर्मिनेशन वाटर इज एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant पिला माने पानी संगे जो सब न्यूट्रिएंट थाए माटी रे ताहा मध्य पानी जरिया रे वृक्ष को जाई थाए बा प्लांट को जाई थाए एवं प्लांट रो ग्रोथ रे हेल्प होई थाए वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम
both forced and hot air currents पिला माने forced and hot air current होची कोन ना उष्म वायु उष्म तापरु प्लांट को वाटर सेव करे. So to maintain the moisture of the soil रो आर्द्रता मेंटेन करबा पई और for healthy crop growth. Okay, crop रो healthy growth पई field have to be water regularly. कौन रो आवश्यकता अछि ना field को पानी दबार आवश्यकता रहिछि. ओके, एतो क्लियर हला कोन पई हमें गछरे पानी पानी दो बा फील्ड रे क्रॉप फील्ड रे पानी दो. एबे समस्त हम बुझी पड़ता पानी रो व्हाई वाटरिंग प्लांट कोन पई प्लांट रे पानी दबार आवश्यकता रहिछि. ओके, सो इरिगेशन कोन व्हाई इरिगेशन इंपोर्टेंट हमें विषय रे जानिले. सो एबे हमें जानिबा ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. पिला माने इरिगेशन रो विभिन्न प्रकार मेथड अछि. फास्ट हमें ट्रेडिशनल मेथड कथा जानिबा. पिला माने ट्रेडिशनल टर्म जो हमें यूज करछे एटा हमें समस्त बहुत क्लियर रहया दरकार जे ट्रेडिशनल कहिले पारंपरिक पद्धति कोन पारंपरिक पद्धति. ओके, सो ट्रेडिशनल कहिले हमें पारंपरिक पद्धति बुझे जोटा हम पीढ़ी दर पीढ़ी हे आसुची. ओके, आगुरु ए उपाय होतला एबे मध्य से उपाय होची सेटा हमें पारंपरिक पद्धति कहउछ. जोटा मॉडर्न साइंस और डेवलपमेंट हवा द्वारा विभिन्न प्रकार उपकरण बाहर लानी जहाँ को व्यवहार करके आम इरिगेशन करि पारछे. सो एठी ट्रेडिशनल मेथड कथा हमें प्रथमे जानिबा. ट्रेडिशनल कोन सब पारंपरिक पद्धति रहिछि से विषय जानिबा. देन हमें मॉडर्न मेथड पर जानिबा. सो वाटर available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking to the field. पिला माने पुराना काल रु कोन हे आसुची ना फील्ड रे पानी दबा पई जो वाटर रो सोर्स रहिछि तुम मानकर वेल हे गला लेक्स हे गला केनाल्स हे गला सेथिरु पानी को विभिन्न उपाय लिफ्ट अप करा जाय कि different regions for taking to the field. विभिन्न प्रकार एरिया रु विभिन्न प्रकार मेथड्स रे पानी आसी कि फील्ड रे दिया जाउछि. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड. ए जगह कोन होछि कैटल लेबर और ह्यूमन रो लेबर यूज होछि. सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट. तो वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर पिलन कहया कथा जे एथिपाई तो आम कैटल आउ ह्यूमन मानकर यूज करुचे. सो दिस मेथड्स आर चीपर बहुत कम खर्च बट लेस एफिशिएंट किंतु बहुत कम लाभदायक बहुत समय लगे. तो वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर कौन सब वेरियस ट्रेडिशनल वेज. ओके, सो मोट हूँ गोटे पुली सिस्टम रे पानी आसे चेन पंप. ओके, डेकली राहत लेबर सिस्टम. So pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. So पिला माने आमे यार चित्र देखिले भलो से बुझी पारिया मोट कोन चेन पंप कोन डेकली कोन राहत कोन एटा को आमे देखिले पिक्चर रे जानि पारिया. पिला माने ये होछु मोट सिस्टम. ओके, मोट सिस्टम रे केमते पानी दिया जाउछ देखो ह्यूमन लेबर को व्यवहार करिके वेल रू पानी काढ़ी केमती ह्यूमन पानी तार फील्ड रे दउछि. तापरे एठी चेन पंप सिस्टम अछि जहा द्वारा कि चेन सहायता रे वाटर टा आसी कि एठी इरिगेट होउछि बा जलटा एठी सिंचन करा जाउछि. तापरे एठी डेकली दिस हमें जो ए सब प्रोसेस गुडा को पढुछि पिला माने ए प्रोसेस सब पुराना प्रोसेस. ओके, गुडा सब ट्रेडिशनल मेथड्स. राहत हे गला केमती कैटल रो लेबर को व्यवहार करा जाउछि. ओके, एठी कोन करा आइछि ना तुम मानकर एठी वेल अछि जोठी पानी फुल रही छि. एठी वाटर रो एटा गोटे सोर्स जोठी गोटे चक्का टाइप रो गोटे जिंस व्यवहार करा जाय छि एवं ताथे बाल्टी उडा लगा जाय छि. एपरे जेतबेले गाईटी कोन कैटल टी बुलु छि सेतबेले एटा कोन एटा बुलु छि एवं पानी को एठी इरिगेट करछि बा जल सेचन करछि. सो एगुडा का सब थिला तमरो कोन ट्रेडिशनल मेथड्स बुझी पारलो. मोट चेन पंप डेकली राहत these all are
traditional methods, okay, जोड़ाक we are used for irrigation, we are using for irrigation. So these are example of traditional method. ए सब गुड़ हूँ ट्रेडिशनल मेथड रो एग्जांपल एवं ट्रेडिशनल मेथड कौन तुम माने समस्त बुझी पारथिबो एबे ओके यदि समस्त बुझी पारछो ताहले चैनल को समस्त लाइक करिवा ओके एवं निजर फीडबैक दबा सो एबे आमे जीवा नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड पढ़िले सर ट्रेडिशनल मेथड कौन आमे जानि गलु पारंपरिक पद्धति कौन जानि गलु एबे मॉडर्न मेथड विषय हमहु कहंतु ओके मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन कौन जल सिंचन करिवार सब मॉडर्न मेथड्स आसिलानी हमहु सर से विषय कहंतु सो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन helps us to use water economically. The main methods used are follows ताल को मेथड्स हमें मॉडर्न मेथड से यूज करछे सेगुडे को देखिबा ओके फास्ट स्प्रिंकलर सिस्टम विषय जानिबा ले माने एथिरे बहुत समय बंचे बहुत जल्दी आवश्यक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर वृक्ष मानक पाखरे बा प्लांट्स मानक पाखरे बा क्रॉप फील्ड रे ओके पहुंची पारे आ एथिरे लेस वाटर जोटा कोन लेस वाटर रे अधिक आम एफिशिएंट पाई थो अधिक शस्य उत्पादन होता है ओके आम समय मध्य बंची थाए as compared to traditional methods okay so first हम जानिबा केमती स्प्रिंकलर सिस्टम रे केमती जल नष्ट बेसी होनी कम समय रे एडिक्वेट अमाउंट रे वाटर टा इरिगेट हे परछ पले माने दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द uneven land where sufficient water is not available पिला माने जोठी सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नाही सेठी स्प्रिंकलर सिस्टम मोस्ट गोटे इंपोर्टेंट वाटर इरिगेशन सिस्टम कोन स्प्रिंकलर सिस्टम कोठी ना जोठी लेस अमाउंट ऑफ वाटर थाए ओके द परपेंडिकुलर पाइप्स पिला माने एठी देखि परथुवा परपेंडिकुलर पाइप्स केम देखि परथु परपेंडिकुलर कहले हम 90 डिग्री बुझुछे सो एई भली परपेंडिकुलर पाइप्स देखो एठी मेन पाइप जाईची एठी आ गोटे मेन पाइप जाईची ताजर सब परपेंडिकुलर पाइप एमती बाहर 90 डिग्री एंगल रो पाइप बाहर सो हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ओके ता पाखर कोन रहिछि रोटेटिंग नोजल्स तार जो नाक गुडी को रहिछि सेडा सब रोटेट करूछि ओके ओके ऑन टॉप रे रहिछि आर जॉइंट टू द मेन पाइप जोडा मेन पाइप रे जॉइंट अछि रेगुलर इंटरवल्स व्हेन water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump. It escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as it is raining. जेमती वर्षार बुंदा आसे ठीक सही भली स्प्रिंकलर सिस्टम रे वाटर टा वर्षार बुंदा हला भली पड़े एवं गछ माननकु sufficient amount of water दे थाए. So sprinkler is very useful for lawns, coffee plantations, okay, and several other crops. को crops पाई एडा को बहुत helpful को जगह helpful. So this is the example of sprinkler system. Okay, हमें समस्त मन रखबा एडा होची कोन तुमरा sprinkler system. It is a example of modern method of irrigation. Next sprinkler system हमें समस्त भलो से बुझी पारले एबे हमें next modern method को जीवा गोटे अच्छी प्ले ड्रिप सिस्टम इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स एटा कोन हुए ए सिस्टम रे डायरेक्ट वाटर रूट पाखरे पहुंचे गछर रूट पाखरे डायरेक्टली पहुंचे सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम जोथि पई एटा को ड्रिप सिस्टम कहा जाए काहे कि ना डायरेक्टली वाटर टा प्लांट रो रूट रे पहुंचे. So it is the best technique for watering fruit plants. Fruit plants पाई इटा best system, garden पाई, trees पाई इटा बहुत helpful. So water is not wasted at all. एथिरे water जम्मा भी नष्ट हुए नहीं. It is a boon in region where availability of water is poor. इटा से जगह बहुत माने गोटे boost boon means boost तमरा बहुत बड़ helpful जिंस जो जगह की water टा less amount रे थाए. ओके बुझी पारलो समस्ते ड्रिप सिस्टम कोन सो इट इज आल्सो ए एग्जांपल ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन
मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन रो ये गोटे एग्जांपल जोटा होची ड्रिप सिस्टम। ओके सो आमे समस्ते ए नोट गुडी को फ्री ऑफ कॉस्ट रे पाई परिबा। ओके समस्ते टेलीग्राम चैनल रे दिया जाइथिबा लिंक रे जॉइन करिबा नचेत हमर उत्कल क्लासेस रो ऐप अछि। उत्कल क्लासेस रो ऐप को डाउनलोड करके क्लास 8 सीबीएसई सिलेक्ट कले आमे सेतुरु ए बायोलॉजी रो नोट एवं यार क्लास वीडियो रेकॉर्डेड क्लास मध्य सेठु पाई परिबा आराम से सेठु आमे वीडियो को डाउनलोड करि परिबा। आ बाकी रहिला तुमरो सेव करबा कथा तुम मैंने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करके पीपीटी को सेव करि परिबो पीडीएफ फॉर्मेट रे। ओके सेठी मध्य ऐप रे मध्य जाइकी फ्रीली तुम माने पढ़ी परिबो। सो समस्ते प्ले स्टोर रु उत्कल क्लासेस ऐप डाउनलोड करि परिबा। ओके सो आमे इरिगेशन सिस्टम देखिले इरिगेशन सिस्टम रे हम कोन पढ़िले पिले ना मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम एंड ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम कोन आमे जानिले व्हाई इरिगेशन सिस्टम इज इंपोर्टेंट सेटा मध्य जानिले व्हाट इज इरिगेशन सिस्टम व्हाई इट इज इंपोर्टेंट आमे से विषय रे जानिले। देन आमे पढ़िले ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम रो ट्रेडिशनल मेथड ऊपर आमे जानिले कौन सब ट्रेडिशनल मेथड थिला मोट हैला चेन पाइप हैला डेगली हैला। ओके सो ए एग्जांपल गुडा हमर मन रखियार अछि। ओके नॉट इट इज इंपोर्टेंट टू डिस्क्राइब ऑल द एग्जांपल्स ऑफ अ मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड रे एग्जांपल गुडा को डिस्क्राइब करिवार इंपोर्टेंस नाही जेति कि इंपोर्टेंट रही छि तर ना गुडी को मन रखिबा। एग्जांपल्स कोन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन रो कौन सब एग्जांपल तार नाम मन रखिबा सेमती तुम मानकर मॉडर्न मेथड सब कौन रहिला तार नाम मन रखिबा। ओके आ ये टर्म गुडा को क्लियर रहबा। ट्रेडिशनल मेथड कहले पारंपरिक पद्धति मॉडर्न मेथड कहले मॉडर्न पद्धति जोटा नुआ एबा आसलानी। ओके सो ए टर्म को समस्त मन रखिबा आ एटा भी मन रखिबा जे मॉडर्न मेथड रो एग्जांपल हो स्प्रिंकलर सिस्टम आ गोटे होची ड्रिप सिस्टम। सो फर्स्ट टॉपिक हम सरीची हम बे सेकंड टॉपिक को देखिबा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सेकंड टॉपिक पिले हम पाखरे होची प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अच्छा प्रथम हम जानिबा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढिबा पूर्वरु वीड्स कहले हम कोन बुझुचे सेटा जाने वीड हम काहा को कहूची। सो इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. प्लान देखो आमे गोटे जति गोटे फील्ड रो एग्जांपल नबा आमे किछटा प्लांट लगौचे आ ता संगे किछ अनाबना गछ ता संगे बढ़ुछंती। ओके सो ए प्लांट गुडा का आमे कहूचे अनडिजायरेबल प्लांट्स। डिजायरेबल मींस कोन आनंद अनडिजायरेबल मींस जोडा का आनंददायक नुहे। सो जो प्लांट गुडा को रिक्वायर्ड आमर नाहंती जो अनाबना गछ गुडी को मन इच्छा बढ़ुछंती। ओके जहा द्वारा कि आमर जो प्लांट रो बढ़िबा कथा तार ग्रोथ रे जो बूस्ट आसीबा कथा सेटा आसी पारुनी ग्रोथ रा अटकी जाउची। ओके सेही भलिया प्लांट्स को हमें वीड्स बोली कहथाउ। सो जो अनरिक्वायर्ड प्लांट्स जो प्लांट गुडा को हमर आवश्यक नाही जो अनाबना गछ रहिला से सब को हम अनाबना गछ को वीड्स बोली हमें कहि थाउ। सो समस्ते हमें जानिले वीड कहा को कहू तापरे एबे जानिबा सर वीड तो जानि गलो बे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। सो वीड्स रु अनाबना गछ रु हमें केमिति प्रोटेक्शन पाइबा कोन सब प्रोसेस अछि जहा द्वारा कि हम क्रॉप फील्ड को ओके हम गार्डन को ए अनाबना गछ दाउरु रखि परिबा। सो what are the methods of protection our of protecting our field कौन सब मेथड हम नहीं परिबा टू प्रोटेक्ट आवर फील्ड फ्रॉम वीड्स मानक ठारू हम फील्ड को प्रोटेक्ट करबा पई हम कौन सब प्रोसेस को आपणैबा। ओके सो से प्रोसेस गुडा को विषय रे एबे हम आलोचना करबा। जो प्रोसेस गुडा को हमें यूज करके आम क्रॉप फील्ड हो गला आम गार्डन हो गला
ताको आमे क्लीन रखि परिबा ताको प्रोटेक्ट करि परिबा वीड थार सो फास्ट प्रोसेस गोटे जानिबा वीडिंग द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग वीडिंग होची पिले गोटे प्रोसेस जोतरे कि आमे अनावश्यक अनावना गछ को रिमूव करिबा बा उपाड़ीबा सेटा को वीडिंग कहूचे सो वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीडिंग होची इंपोर्टेंट और नेसेसरी कौन पाई कहीं ना ये जो अनावना गछ गुड़िक अनावना क्रॉप गुड़िक क्रॉप प्लांट सांगे कौन करती कंपटीशन करती केमिति ना क्रॉप प्लांट को जो जेतिक वाटर रिसीव करिया कथा जेतिक मिनरल रिसीव करिया कथा गोटे फील्ड रे हमर चारिटा गछ लागि जदि ता देहरे आहुरी अनावना 1000 गछ कि 100-200 गछ सृष्टि हब आमे जो जेतिक पानी दउचे चारिटा गछ पाई सेटा कोन हबो ये अनावना गछ मानक भितर बांटी हे जो मिनरल ता आमे दउचे जो फर्टिलाइजर जो मैन्योर आमे ऐड करूचे से कौन करिवो ना अनावना गछ मध्य ताको रिसीव करिवे जहा फल कि हमर जो नेसेसरी प्लांट गुडा रहला से मानकर ग्रोथ ता कमी जीवो ओके दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप ए भई भाबरे से मन कौन करंती क्रॉप रो ग्रोथ रे बाधा सृष्टि करंती सम वीड्स इंटरफेयर इवन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स या माने किछि प्लांट एमिति भी अछंती जो माने पॉइजनस जो माने विषाक्त एनिमल मानक पई एवं ह्यूमन बीइंग्स मानक पई मध्य द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स पिला माने वीडिंग रो जो टाइम वीडिंग रो बेस्ट टाइम जोटा ओके वीडिंग रो बेस्ट टाइम जोटा होची वीडिंग पाई जोटा बेस्ट टाइम सेटा होची कोन फल फूल धरिबा पूर्व फल आउ फूल आम क्रॉप फील्ड धर आम क्रॉप फील्ड रे आमे FIELD आम क्रॉप फील्ड रे आमे कौन करचे ना आमे गोटे धान चाष करचे सो धान क्षेत्र रे धान हवा पूर्व आमे वीडिंग करिबा सो वीड्स अनावना गछ को उपाड़ीबा होची वीडिंग क्लियर वीड होची अनावना गछ को रिमूव करिया होची वीडिंग सो इट इज नेसेसरी एंड इट इज इंपोर्टेंट because it competes with it because weeds are compete with our necessary crops necessary plants necessary trees एमाने आम नेसेसरी प्लांट ट्री एमानक संगे कंपटीशन करंती आमे जो वाटर दोस थे माने ताको एब्जॉर्ब करंती जहा द्वारा आम प्लांट रो आम क्रॉप फील्ड रो ग्रोथ हे पारे नाही सो वीडिंग इज इंपोर्टेंट सो देयर आर सम प्रोसेसेस दैट वी कैन यूज फॉर वीडिंग पाई आम पाखे किछिटा प्रोसेस अछि जहा को आमे व्यवहार करि परिबा ओके आ पूर्व गोटे कन्फ्यूजन हे जाइथो वीड्स आ वीडिंग भितरे सो एबे क्लियर करूछि पिले वीड होछि कोन ना तुमर अनाबना गछ वीडिंग होछि रिमूवल ऑफ वीड्स सो ए वीडिंग को ए जो वीडिंग रहिला तार बहुत प्रकार प्रोसेस अछि वीडिंग मींस रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स अननेसेसरी अनावश्यक प्लांट को रिमूव करबा को वीडिंग कहूचे वीडिंग रो विभिन्न प्रकार प्रोसेस अछि ओके फार्मर अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ तांकर ग्रोथ आ अनावना गछ को उपाड़ीबा पई फार्मर माने विभिन्न प्रकार प्रोसेस नियंती से प्रोसेस गुडी कहूचे टिलिंग द मैनुअल रिमूवल एंड वीडिसाइड्स ओके सो प्रथम आमे जानबा टिलिंग कोन ओके टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स help in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil पिला माने टिलिंग होजी जो हळ कोच आमे ओके टिलिंग होजी जो प्लगिंग आमे जो कोच हळ बुलेबा ताको आमे टिलिंग कोचे ओके मंजी बुनिबा पूर्वरु टिलिंग ओके सेटा होची बहुत इंपोर्टेंट कोन पई जेतो बळे अनाबना गछ गुडी को माटी रे मिसी जानती से माने खत भली काम करंती ओके एवं एगुडी को माटी रु मध्य उपुडी जाई थांती सो ये गोटे प्रोसेस आम ताकू करि परिबा जहा द्वारा कि आमे वीड्स मान को उपाड़ी परिबा हळ सहाय्य रे देन द मैनुअल रिमूवल कहले फिजिकली रिमूवल आमे दारे काटी परिबा आमे उपाड़ी परिबा हाथ रे ओके
physical removal of weeds by uprooting or cutting them close the ground. Okay, ground ro पाखरु ताकू काटी देबा किबा उपाड़ी देबा time to time. This is done with the help of खुरपी दा जोटा तुमरो. A seed drill is also used to uproot weeds. ये गोटे खुरपी होची तार इमेज मु तुमको शेयर करछे बा. सो ये इमेज टा हम शेयर करबा. इमेज गूगल. ओके, सो स्क्रीन रे समस्त देखि पड़थबे. इथे हमें लिखिबा खुरपी. खुरपी. Okay, so then search. Okay, okay, so this is the image of a khurpi. Khurpi. Okay, এটা ଗୋଟେ দা ভଳିতা ଜିନିଷ. Okay, দা তো ଆମେ দা ବୋଲି କହି ପାରିବା. Okay, so this is the image of khurpi जोटा को ଆମେ काटी थाउ घास गुडिक अनाबना गछ गुडिक. आ गोटे होला weedicides. Weedicides means तुम माने जानथिबो आमे जो स्प्रे करू विभिन्न प्रकार chemicals. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. Okay, 2 हे गला गोटे 4D ना रे अछि. सो एगुडा को आमे स्प्रेड करू फील्ड रे to kill weeds. Weeds मान किल करबा पई. They do not damage the crops. माने क्रॉप्स रे किछि शस्य गुडी को किछि प्रभाव पकांती नाही. एई भली जेमति आमे चित्र देखि पड़तबा केमति फार्मर टी वीडसाइड स्प्रे करूजे जा द्वारा अनाबन गछ नष्ट होई थांती किंतु क्रॉप ऊपर किछि प्रभाव पड़ी न थाए. देन हार्वेस्टिंग. ओके, so harvesting of a crop is an important task. अमल करबा हमें जहा को कहूचे द ताहला हार्वेस्टिंग कोन. द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जेतो बोले शस्यटी मैच्योर्ड हे जाए तार ताकू उत्पादन करबा को ताकू कटिंग करबा को हमें हार्वेस्टिंग बोली कहि थाउ बा अमल करबा कहि थाउ. इन हार्वेस्टिंग crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for cereal crop to mature. Okay, harvesting in our country is either done manually by sickle or by machine called harvester. So हमें समस्त धान खेत देखिचे. धान जतबले कटा जाए सेतबले ह्यूमन माने एमती दा नै कि जानती एवं ग्राउंड रे फील्ड रु पूरा मूल रु कौन करती धान को दा द्वारा काटी थांती. एबे कंबाइन मेसीन आसी गलानी जहा द्वारा डायरेक्ट धान को कटा जाय कि ताजरो तुम मानकर शस्य उत्पादन करा जाई पारुछि. देन थ्रेसिंग. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चार्ट. पिला माने ओगाडी थांती जो तरे कि धरो आमे देखिता धान किछि धान जो तार आम समस्त देखा जो धान बाड़िया हो जाए धान उड़िया हो जाए से धान जो उड़ा जाए से गुड़ाक कि कौन कहती जो धानर आम कही था से पर्टिकुलर टर्मटा मु रिकल कर पारनी बाकी चाउल जोटा थाए सेटा ता भीतर थाए आ केतेटा खाली चोपा थाए. ओके, केतेटा भीतर चाउल थाए केतेटा भीतर चाउल न थाए. जहाँ भीतर चाउल न थाए
ताको हम ओगाड़ी इंग्लिश से चाफ बोली कही था। ओके सो ये जोड़ा रहा तुम क्रॉप जोड़ा शस्य रहा जोड़ा अगाड़ी रहा शस्य को अगाड़ी अलग करने थ्रेसिंग जोटा कहू इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड जो ग्रेन थाए ओके जो मंजी थाए बा धान थाए जो सॉरी जो चाउल थाए ताकू सेपरेट करवा चाप ठारू ताकू अगाड़ी ठारू अलग करवा से प्रोसेस को हम थ्रेसिंग बोली कही था। दिस इज कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन एटा कंबाइन मशीन रे हुए व्हिच इज इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर सेथिरे अमल मध्य हुए सेथिरे सेपरेट मध्य अगाड़ी को करा जाय थाए। ओके विनोइंग फार्मर्स विथ द स्मॉल होल्डिंग ऑफ अ लैंड जो मान पाखे कम लैंड थाए से माने विनोइंग प्रोसेस रे सेपरेशन करथांती ग्रेन को चाप ठारू अगाड़ी को धान ठारू अलग करथांती जो मान पाखे कम फील्ड थाए से माने काहे कि कंबाइन मशीन रे बहुत टंका खर्च होता है से भाई से माने विनोइंग मेथड फॉलो करंती। ओके देन हार्वेस्ट फेस्टिवल पिला माने अमल हेबा परे हार्वेस्ट फेस्टिवल हुए अमलर फेस्टिवल मना जाए आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क 3-4 मास कठिन परिश्रम परे देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट अमलर समय आसे द साइट ऑफ अ गोल्डन फील्ड ऑफ अ स्टैंडिंग क्रॉप laden with grains fill the heart of a farmers joy and sense of well-being पिले माने कोन हुए ना जेतबेले शस्य क्षेत्र में शस्य आसी जाए शस्य पाची जाए से फार्मर हृदयटा खुशी खेली जाए आउ आनंद लगे द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय वर्तमान तार मेहनत रंग आनी वर्तमान समय मिली रिलैक्स करने और एंजॉय करने जो कठिन परिश्रम से करता 4 मास 5 मास धरी तार जो फलटी भल तार जो फाइनल रिजल्ट आसे से समयटा को रिलैक्स और एंजॉय टाइम बोली कहुई। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस से पीरियड ऑफ हार्वेस्टा सब आनंददायक और खुशीदायक होता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया men and women celebrates it with great enthusiasm enthusiasm means आग्रह पिले enthusiasm means आग्रह बहुत आग्रह रे men और women माने को सेलिब्रेट करंती स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विथ द हार्वेस्ट सीजन इंडिया रे ये अमल समय बहुत फेस्टिवल थाए जोड़ा को पोंगल हो गला बैसाखी हो गला होली हो गला दिवाली हो गला ओके नवनया हो गला बिहू हो गला एगुड़ाक सब अमल समय रिलैक्स करती को माने फार्मर माने सो देन अमल सरला परे आसी जाए स्टोरेज केमिति स्टोर करिकी रखिबा गोटे बहुत बड़ टास्क हो जाए जोड़ा को आम धान शस्य आम जो क्रॉप फील्ड रु एते लेबर करिकी आम फाइनाली ग्रेन्स गुड़ाक पाइले तो सही शस्य गुड़ाक केमिति स्टोर कर रखिबा सही धान से धान जो चाउल गुड़ाक बाहरला धान गुड़िक बाहरला ताकू केमिति आम स्टोर करके रखा सेटा गोटे बिग टास्क हो जाए। सो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क जहाँ आसी थाए जहाँ उत्पादन होता है तांको केमिति स्टोर करके रखा सेटा गोटे बहुत बड़ टास्क। इफ द हार्वेस्ट ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम जदि हार्वेस्ट ग्रेन हार्वेस्ट शस्य को आम बहुत समय रखापी चाहूँ दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर रु इंसेक्ट्स मानक ठारू रैट्स ठारू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठारू माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गला तुम मूषा हो गला तुम इंसेक्ट हो गला तुम मॉइस्चर हो गला ये सबू ठारू ताको प्रोटेक्ट कर रखिबार अछि। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर हार्वेस्टेड ग्रेन रे मॉइस्चर बेसी था। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स और सीड्स जो मंजी कहूचे आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग जदि आम ताको न सुखेई स्टोर करदेबा they may get spoiled or attacked by organism making them unfit for use for germination। सो पिला माने जदि आमे आकु न सुखेई रखिबा ए सब जिंस नष्ट हो जाए ग्रेन गुडी को सीड्स गुडी को नष्ट हो जानती
Hence, before storing them, स्टोर करबा पूर्व द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड ताको भलो से सुखा जाए तार सब मॉइस्चर को सनलाइट द्वारा सुखे कि हम ताको मॉइस्चर रू ड्राई करू इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर. This prevents the attack by insects, pests, bacteria and fungi. ये सब बैक्टीरिया रू फंजी रू ताको दूरे रखे. So farmer store grains in jute bags. सेतिबाई farmer माने jute bag रे store करिक रखंती और metallic beans रे रखंती. metallic beans रे रखंती. metallic beans हम जदि कहबा एम्ति metal रे थिबो हम घरे समस्तिकर चाउल जो रखा जाए. However, large scale storage of a grain is done silos. पिला माने गुडा कहूची कोन तुमर silos of storage of a grains. ये जो चित्र गुड़ा देखुचे याको हमें सिलोस कहूचे बड़ बड़ सिलोस गुड़ा को. ओके फार्मर स्टोर्स ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स. हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज मेटालिक बीन्स रो हमें तो रखुचे घरे हमर ड्रम रहिछि. लार्ज स्केल स्टोरेज में हमें सिलोस एंड ग्रानारीज टू बी प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट. सो सिलोस रे रखुचे ओके आ ग्रानारीज रे मध्य रखुचे. So এটা হচ্ছে silos, এটা হচ্ছে granaries. Okay. Then last topic animal husbandry. Food from animals. हम जेमति plant थारु food पाऊ सेमति animal थारु मध्य food पाऊ. We have just seen that the process of a crop production involves a number of steps like selection of seeds, showing etc. बहुत प्रोसेस होची कोन गोटे माने क्रॉप फील्ड रे शस्य क्षेत्र रे शस्य उत्पादन करिवा पई हम बहुत प्रोसेस को व्यवहार करछे. सीड सिलेक्शन हे गला, सोइंग हे गला, इरिगेशन हे गला, हां तापर पेस्टिसाइड्स पकेवा हे गला, फर्टिलाइजर मैन्योर ऐड करिवा हे गला. एमति बहुत सारा प्रोसेस. सिमिलरली एनिमल reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. जदि आमे घरे गृहपालित पशु रखुचे सेमानकर केयर नबाकु पड़े, सेमानको समय खाइबा को दबाकु पड़े. When this is done on a large scale it is called animal husbandry. आमे जदि एटा को बहुत बड़ स्केल रे करूचे ताल ताको एनिमल हस्बेंडरी कहबो. धरो आमे 20 टा गाई रखिले ताले आमे ताको एनिमल हस्बेंडरी जो एग्जांपल दे परिबा. धरो आमे जेम कुकुड़ा चाष होई गला. ओके कुकुड़ा चाष रे हम कोन करछे बहुत सारा कुकुड़ा को रखुचे बड़ करूचे. सो दीज आर एग्जांपल ऑफ एनिमल हस्बेंडरी. सो एनिमल रू फूड दैट इज एनिमल हस्बेंडरी जो जोठी के हमें लार्ज स्केल ऑफ एनिमल्स मान को रखे कि कोन करछे सेमान को केयर नउचे. ओके सेमान को फूड दउचे, सेमान को बासगृह दउचे. ओके सेटा को हमें एनिमल हस्बेंडरी बोली कहछे. ओके सो ए टर्म गुडा का हम सब मन रखियार अछि. आज रो क्लास रे हम जहां भी डिस्कस कले आशा करछि समस्त को भलो से बुझी आसीथिबो. यदि क्लास स्पीड होउछि किबा किछि बुझिबार असुविधा होउछि डेफिनेटली तुम माने कमेंट सेक्शन में जणाओ. नेक्स्ट क्लास रे हम ताको आहुरी तुम मान को कंफर्टेबल अनुसार क्लास नबु. देन समस्त चैनल को सब्सक्राइब करो एवं आम मोबाइल एप्लिकेशन को प्ले स्टोर रू डाउनलोड करके सेठे सुविधा रे हम समस्त पढ़ी परिबा. ओके और बाकी पीडीएफ फाइन टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाइछि. समस्ते ताको क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल जॉइन करो एवं पीडीएफ सब डाउनलोड करो. ओके जोटा कि तुमको हेल्पफुल होबो पाठ पढ़िबा. सो आमे पुनी देखाबा गोटे नुआ लेक्चर रे नुआ क्लास रे. से पर्यंत रहउछि. जय जगन्नाथ.